Moving on to 5C, part 1. A transmission line of length 45 kilometers has an attenuation per unit length of 2 decibels per kilometer. The input power to the transmission line is 500 milliwatts. The minimum acceptable signal to noise ratio is 24 decibels for background noise of 5.0 into 10 to the power minus 13 watts. So noise की power आपको दी हुई है, signal strength minimum आपको चाहिए, minimum acceptable power output from the transmission line. SNR आपको दिया हुआ है कि acceptable जो है वो minimum acceptable is 24 decibels. So basically transmission line कर क्या रही है? You have an input and of course you have an output. और क्या होगा? Transmission line basically क्या कर रही है? The transmission line is connecting these inputs and this input and this output. Input power जो आपको बताई हुई है वो है 500 milliwatts. I'll just write with this. 500 milliwatts is your input power और output power आपको पता करनी है. So this is P in या आपका जो सिग्नल की जो पावर है बेसिकली, ठीक है, that is being input. Now when you're transmitting, what's happening is you're losing 2 decibels per kilometer और minimum acceptable जो SNR है आपके पास that is 24 decibels. इस केस में भी आपके पास जो फॉर्मूला होता है, the formula is simple. 24 डेसिबल का मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो है एंड दिस डेसिबल जो होता है वो होता है 10 log एंड एसएनआर की अगर आप बात करें तो आपके पास सिग्नल पावर टू नॉइज पावर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज व्हाट दिस एसएनआर इज. ठीक है, आपके पास जो नॉइज की पावर आपको दी हुई है, so this will become 24 is equal to 10 log minimum power output और rather सिग्नल जो है, सिग्नल की पावर आपको चाहिए होगी if the given noise power is 5 into 10 to the power minus 13 watts. 5 into 10 to the power minus 13 watts की नॉइज जो है वो ऐड हो रही है और जो मिनिमम एक्सेप्टेबल है आपके पास वो 24 डेसिबल्स है. तो उसके लिए आपको आउटपुट मिनिमम आउटपुट पावर कितनी चाहिए होगी, दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. So this becomes 2.4 is equal to Lg P min over 5 into 10 to the power minus 13, and you solve this entire thing and your minimum power output comes out to be 1.26 into 10 to the power minus 10 watts. बेसिकली अगर आपके पास 24 डेसिबल्स का एसएनआर हो, ये आपके पास सिचुएशन है कि 2 डेसिबल्स पर किलोमीटर आपकी अटेन्यूएशन हो रही है. सो बेसिकली जो आउटपुट पावर आपके पास मिनिमम आ सकती है दैट कैन बी 1.26 into 10 to the power minus 10 watts.